नमस्कार। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी और उससे ठीक पहले शुक्रवार को उन्होंने लोकसभा में ये इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है, जिसमें अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई हैं सांसदों के साथ। ये रिपोर्ट जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं डॉक्टर अनंत नागेश्वरन, उनकी देखरेख में तैयार किया गया है, उनकी टीम ने तैयार किया है और वो अब खुद इस रिपोर्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है अनंत नागेश्वरन। सबसे ज़्यादा चर्चा आपके ग्रोथ रेट के प्रोजेक्शंस को लेकर है। आपने ये कहा है कि मौजूदा वित्तीय साल में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 6.4% रहने का अनुमान है। FY26 के लिए आपने एक प्रोजेक्शन दिया है 6.3% टू 6.8%। तो मेरा पहला सवाल इसी से है कि पिछले वित्तीय साल में लास्ट फाइनेंशियल ईयर इंडियन इकोनॉमी ग्रू बाय 8.2%, बट दीज प्रोजेक्शंस दैट यू हैव मेड, जो आपने पूर्वानुमान जताया है, दे आर लेस देन लास्ट ईयर। इसकी वजह क्या है और ग्रोथ मोमेंटम को वापस लाने के लिए क्या करने की जरूरत होगी सरकार को? Sure. Well, I mean, we are just less than 24 hours away to find out what the budget can do or will do in terms of restoring the growth momentum. So we don't need to speculate on it right now. But what we can do from the medium term perspective is what the economic survey is focused on. More importantly, to answer your question, the growth slowdown in India isn't an isolated phenomena because there is a global economic activity index of the Federal Reserve Bank of Dallas, which has been coming down since 2023. Global activity is subdued and India is part of it. So, and in addition, there were unique factors in FY 24-25, such as the national elections in the summer, and then excess monsoon rainfall in August and September, etc. Some of them are temporary factors, and the central bank also had introduced several macroprudential measures which were necessary at that point, but which may have in combination exerted a strong influence on credit growth, etc. They are on their way out as well, and the central bank is pumping in more liquidity. So considering all of that, we feel that the growth performance can pick up in FY26. But more importantly, as I said, the global environment has become more challenging, and that is the primary reason for us to estimate that next year's growth rate will be in the range between 6.3 and 6.8%. एक सवाल था कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार, हाउ टू ब्रिंग बैक द ग्रोथ मोमेंटम. व्हेन द प्राइम मिनिस्टर चेयर्ड अ मीटिंग विद इकोनॉमिस्ट, we were told that the broad theme of the interaction was centered on how to bring the growth momentum in the economy. Now, we do know that you have had several rounds of interactions with stakeholders, especially leaders of industry, economists, and there are broadly two kinds of views. One, that you try and reduce the personal income tax rates, that in turn helps people save money, then they invest more money in the economy, और उससे फिर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगा और फिर डिमांड बढ़ने से अर्थव्यवस्था में रफ्तार आएगी. दूसरा है कि आप कैपेक्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा स्पेंडिंग करें बिकॉज रिटर्न्स आर मच बेटर. आप 100 रुपया खर्च करते हैं, इफ़ यू स्पेंड 100 रुपीज़ तो 250 रुपीज़ तक रिटर्न अर्थव्यवस्था को मिलता है. तो आपकी क्या सुझाव है इस दिशा में कि डिमांड को इंक्रीज करने के लिए अर्थव्यवस्था में क्या करने की ज़रूरत होगी? आपने क्या प्रोजेक्शन किया इसमें? So, I mean, yes, putting more money in the hands of people is not just is not something that we can only do through government policies, but in the formal sector, in terms of hiring and compensation, companies hiring more and compensating better will also trigger its own chain reaction in a virtuous way. As there is more hiring and more compensation, there will be greater demand for consumption products, which can in turn trigger more investment on the part of corporation. That is why economy is considered usually, with government and the foreign sector being external forces, the rest of the households and enterprises, it is considered a closed loop system, and one can reinforce the other. That is also another angle that has to be kept in mind. And of course, we suggest that deregulation is one way
to allow economic activity to become wider, more pervasive, and deregulation will remove the fear of growth in micro, small, and medium enterprises. And that way, they will also it will also lead to more hiring and income growth as well. These are the two specific areas that the economic survey looks at in greater detail. इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था कि आपने कहा है कि कई छोटी फैक्ट्रियां हैं, कई ऐसी सीजन्स होते हैं जब डिमांड बहुत ज़्यादा होता है उनके पास काम का, और फ्लेक्सिबल होना चाहिए वर्किंग आवर्स। एक बड़ी बहस चलती रही है कि वर्किंग आवर्स बढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़े। आपने भी फैक्ट्री एक्ट में अमेंडमेंट का एक सुझाव दिया है, विशेषकर छोटी फैक्ट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में। इस बहस को आप कैसे देखते हैं, और ये फैक्ट्री एक्ट में अमेंडमेंट अगर किया जाता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा? No, I mean, that is a specific example we have given. Basically, that was just to illustrate the point that when it comes to boosting economic activity, we need to take a closer look at regulations related to land and labor. Capital, we have done a lot in the last 20, 30 years on financial markets and capital market reforms. Right. So my next question is about the Trump 2.0 in US, और एक बहुत चर्चा है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में कि टैरिफ को लेके एक बहुत ही टफ स्टैंड डोनाल्ड ट्रंप लेने वाले हैं। क्या आपने कोई आकलन किया है, आपने जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस किए हैं इसमें आपने कोई आकलन किया है कि अगर अमेरिका या ट्रंप प्रशासन आगे चलकर भारत से जो प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट होती है, अगर वो टैरिफ्स बढ़ाते हैं तो उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा? Our economic projections for next year are not based on what actions the current US administration may take or may not take with respect to India, because that is speculative in nature, and we don't want to get into that. We basically, the projections recognize that the global environment has become more challenging and more uncertain with respect to investment, with respect to trade, etc. And that is what Chapter 5 deals with, and it is the growth forecast is a recognition of that rather than specific actions that may or may not be taken by one particular country or the other. Right. विकसित भारत का एक बड़ा एजेंडा है भारत सरकार का, और उस पर भी कई तरह के प्रोजेक्शंस हैं, बहुत सारे चर्चाएं इसको लेके होती रही हैं। आज प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि जो बजट सत्र है उन्हें उम्मीद है कि विकसित भारत का जो एजेंडा है वो बजट जो है वो उस दिशा में आगे लेकर देश को जाएगा। विकसित भारत का जो एक बड़ा एजेंडा है 2047 तक, 2047 तक, टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री, व्हाट इज़ योर असेसमेंट, एट व्हाट स्पीड, किस रफ्तार से आपको लगता है इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाना ज़रूरी होगा 2047 तक? अगर So I think to reach that kind of numbers in dollar terms, we are looking at somewhere between 9 to 10% nominal growth in dollar terms over the next 20 years or so to be able to become a developed country. And that is not, that's quite possible, because even if you are able to achieve a real economy growth rate of between 6.5 and 7, you add inflation of about 4%, and then if you're able to limit the currency depreciation to less than 1% per year, then we will be able to achieve a dollar GDP growth of 9.5 to 10% every year over the next 20 years. So in that sense, our projections are not making the goal of a developed nation difficult, but it is in line with that. In line with that. Thank you. One last question about artificial intelligence. Your economic survey talks about in detail about the possible impact of artificial intelligence on economy, on industry, on private companies. What is your assessment of what the government should do? सरकार को artificial intelligence के असर से निपटने के लिए, उसका बेहतर इस्तेमाल करने के लिए, प्रोडक्टिव यूज़ के लिए क्या करना होगा आने वाले दिनों में? आपको लगता है कि वो नीतियाँ अभी हैं देश में? No, I think it is very difficult to be concrete about these developments because they are still evolving and the technology is still at a slightly early stage. So therefore, there is no immediate answer that we are giving, but it is more about the long term. How do we approach the labor market implications of artificial intelligence or new technology in general? How to make sure that we keep in mind the fact that we have the responsibility to create 8 million jobs as well. राइट। आपने एनडीटीवी से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.